Welcome to Odisha Automation Solution. Today's class is Pneumatics and Electro-Pneumatics. Application in Industrial Control Circuit. इंडस्ट्री में न्यूमेटिक्स का रोल क्या है आज आज इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बेसिक थ्रो से. ओके. इंट्रोडक्शन. The word pneumatics coming from Greek, pneumos means breath or air, atic means movement or action. Pneumos plus actic is a pneumatics. Pneumatics is a type of power transmission that uses compressed air to create movement. जितना भी हमारा जो कंपोनेंट्स है न्यूमेटिक्स का थ्रो एयर से वो मूवमेंट होगा मतलब काम करेगा. ओके. इन न्यूमेटिक्स कंट्रोल compressed air is used as the working medium. compressed air is used as a working medium. वर्किंग के लिए compressed air जरूरत है. ओके. Normally at a pressure from 6 bar to 8 bar. Using pneumatics control, maximum force up to 50 bar can be developed. Actuation of the control can be manual, pneumatics, or electrical actuation. Signal medium such as compressed air at pressure of 1 to 2 bar can be used. Pilot operated pneumatics or electrical signal DC or AC source 24 volt to 30 volt can be used in electro pneumatics. 1 bar equal to 1455 psi. then इसका application क्या देखें. pneumatic systems are used in controlling train doors, automatic production line, mechanical clamps. Here is the example of the application examples are there. Okay. Then general application of pneumatics control. General application क्या है देखिए. प्रोसेस इन कंट्रोल में क्लैंपिंग, शिफ्टिंग, मीटरिंग, ओरिएंटिंग, फीडिंग, इजेक्शन, ब्रेकिंग, बॉन्डिंग, लॉकिंग, पैकेजिंग, फीडिंग, डोर और चूट कंट्रोल के लिए ये प्रोसेस के लिए. मैन्युफैक्चरिंग में ड्रिलिंग ऑपरेशन, टर्निंग, मिलिंग, सॉइंग, फिनिशिंग, फॉर्मिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल. ये न्यूमेटिक्स का कंट्रोल का एप्लीकेशन है कि कौन सा प्लेस में आप न्यूमेटिक्स को यूज कर रहे हैं. देन सेफ्टी प्रिकॉशन. न्यूमेटिक्स को यूज करने का टाइम में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हम यूज करेंगे वो देखेंगे. Generally, trainees should only work with control systems under the supervision of a trainer. Observe specification including in the datasheet for the individual components and in particular all safety instruction. Mechanical. Mount all of the components securely onto the profile plate. Limit switch may not be actuated frontally. Electrical. Electrical connections must only be established and interrupted in the absence of voltage. Use connector cable with safety plugs only for electrical connection. Use low voltage only, maximum 24 volt DC. Pneumatics. Don't exceed the maximum permissible pressure of 6 bar 600 kPa. Don't switch on the compressed air until all the turbine connection has been completed and secured. Connect the components using plastic tubes with an outside diameter of 4 or 6 mm. Press the blue release ring down, after which is tubbing can be pulled out. This is the safety precaution. Then basic principle of pneumatic. Pneumatic system is consisting of a source of compressed air which is controlled by valves and fed to cylinders to give output.
The compressed air is obtained from a compressor. Air is flown through pipes and connectors to valves which control the flow of compressed air. The air is passed to cylinder by the help of pipes, connectors and directional control valve from compressor. Finally, the used compressed air is released to the atmosphere as exhaust. During the above process, the compressed air may pass through filters to clean moisture. It may also pass through regulator and regulating valves to control the amount of pressure. देखिए इसका मीनिंग क्या है, प्रोसेस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमेटिक्स। पहला क्या है, कंप्रेसर, देन स्टोरेज रिजर्वर। जो कंप्रेसर से जो हमारा जो एयर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी स्टोरेज, दिस इज द एनर्जी स्टोरेज रिजर्वर। आफ्टर दैट गुड एयर क्वालिटी, एयर के लिए फिल्टर, देन कंट्रोल वाल्व, एनर्जी फ्लो, देन रेगुलेटर, एनर्जी कंट्रोल के लिए। आफ्टर दैट दिस इज द आउटपुट सोनल वाल्व, एनर्जी कंट्रोल, न्यूमेटिक सिलेंडर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सेम लाइक देखिए, pneumatic system is consist of a source of compressed air which controlled by valve feeding to cylinder to give the output. The compressed air is obtained from the compressor. Air compressor is obtained from the compressor. Compressor से compressor air other. Air flow is through pipes and connectors valves which control the flow of compressed air. The air is passed to cylinder by the help of pipes, connectors, directional valves. Finally, the used compressed air is released at the atmosphere as an exhaust. During the above process, compressed air may pass through filter to clean the moisture. It may also pass through regulator, regulating valves to control the amount of pressure. Pressure को control करने के लिए regulating valves and regulators are used. Okay? देखिए ये है, पहला है, ये है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये कंप्रेसर। उसके बाद जो एयर इसमें, ये जो हमारा टैंक है रिजर्वर, इसमें स्टोर होगा। देन ये मेरा फिल्टर है। ओके, गुड क्वालिटी ऑफ एयर। ओके, मॉइस्चर को ये कंट्रोल करेगा, मॉइस्चर निकाल के फिल्टरेशन करके। आफ्टर दैट कंट्रोल वाल्व, दिस द कंट्रोल वाल्व, कंट्रोलिंग करने के लिए वाल्व को। ये रेगुलेटर, रेगुलेटर मीन्स कितना एयर आपको देना है, रेगुलेटिंग करके ये वोल्टेज, मतलब वो एयर पास करेगा। उसके बाद सोलेनोइड वाल्व, ये है मेरा आउटपुट एक्चुएशन के लिए। एयर थ्रो एयर से ये वाल्व मेरा एक्चुएशन होगा। ये वाल्व है न्यूमेटिक सिलेंडर, ये मेरा आउटपुट है। इसको जितना भी एयर चाहिए थ्रो सोलेनोइड वाल्व से ये एक्चुएट होगा। एक्चुएट करने के बाद ये मेरा एयर इस थ्रो से पास होके ये मेरा एक्चुएशन काम करेगा। ओके, देन देखिए कंप्रेसर एंड स्टोरेज टैंक। कंप्रेसर क्या है, स्टोरेज टैंक क्या है? An air compressor is a machine that uses a electric motor or gas engine to power a device that sucks in successive volume of air from the atmosphere. Compressed squeezes each volume of air in a confined place to increase its pressure by making the volume smaller and then transfer the high pressure air to the receiver tank. कंप्रेसर का काम यह है, स्टोरेज तक, जितना भी जो हमारा स्टोरेज तक जा रहा है एयर जो स्टोरेज होगा, ये इसका काम है। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है, टोटल डायग्राम है एक कंप्रेसर का, कैसे एयर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। ये टोटल जो इक्विपमेंट्स है जितना भी उसमें इक्विपमेंट है। उसके बाद एक एक देखेंगे। देखिए वाल्व, वाल्व इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड and pressure within a system or process. A valve controls system or process fluid flow and pressure by forming any of the following functions: stopping and starting
fluid flow, varying throttling the amount of fluid flow, controlling the direction of fluid flow, regulating downstream system or process pressure, relieving component or piping over pressure. There are many valve designs and types that satisfy one or more of the function. यह है valve का काम। valve का कैसे काम कर रहा है वो ये है डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद न्यूमेटिक्स valve। न्यूमेटिक्स valve क्या है? valves control the air flow in the pneumatic system। जितने जो valve है air flow in the pneumatic system, air flow को control करने के लिए ये pneumatics valve है। It also control the flow of exhaust air to the atmosphere। It can start and stop a pneumatic signal depending on design। These can be divided to following category। जितने जो भाग है वो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट देखिए, डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व डीसी भाल्व, फ्लो कंट्रोल भाल्व आरबी, शटर भाल्व और गेट सीबी, डुअल प्रेशर भाल्व एंड सीबी, न्यूमेटिक्स proximatory valve, pneumatic based time delay valve, quick exhaust valve, pressure sequence valve, on off valve with filter regulator, pressure regulator with pressure gauge for pressure measurement, pneumatically actuated limit switch। यह जितना भी है ये कैटेगरी है। जितना टाइप का जो भाल्व है ये सब कैटेगरी है। हाउ टू रिकॉग्नाइज ए भाल्व? एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड भाल्व को आप कैसे रिकॉग्नाइजिंग करेंगे? देखिए, ए भाल्व विल बी रिकॉग्नाइज बाय इट्स नंबर ऑफ पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोजीशंस, मेथड ऑफ एक्चुएशन। पोर्ट रिकॉग्नाइजेशन बाय आईएसओ स्टैंडर्ड एज पर आईएसओ 1219, supply port P, exhaust port R and S, output ports A and B, pilot port set Z, pilot port reset Y। As per ISO 5599, supply port 1, exhaust port 3 and 5, output port 2 and 4, pilot port set 14, pilot port reset 12। ये क्या है? जो हमारा जो भाल्व है, भाल्व के ऊपर ये नंबरिंग रहता है। ओके, एज पर आईएसओ आप उसमें पी लिखा होगा तो ये सप्लाई पोर्ट है। उसमें आप जो पोर्ट में कनेक्शन करेंगे ये सप्लाई पोर्ट है, ये एयर को फ्लो करेगा। सेम लाइक इफ वन इज देयर दैट टाइम आल्सो सेम सप्लाई पोर्ट दिस इज ओके। फॉर रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये भाल्व का आईएसओ स्टैंडर्ड है। व्हाट इज ए पोर्ट? पोर्ट क्या है? Port are the terminals present on the valve body through which air can be in or out। Type of ports in a valve there will be four type of ports। वो एक है supply port, two output port, three exhaust port, four pilot port set or reset। Ports will be recognized by a standard number of numbers or a standard letter। जो ये जहाँ ये पोर्ट रिकॉग्नाइजेशन टाइम में जो लिखा था ओके, वही चीज इधर मेंशन किया है। डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व। डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व क्या है? डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व डीसीबी आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ द hydraulic and pneumatic systems। DCBs allows fluid flow, hydraulic oil, water or air into different paths from one or more source। DCBs will usually consist of a spool inside a cylinder which is mechanically or electrically actuated। The position of the spool restricts or permits flow through it control the fluid flow। Okay, classification। Directional control valves can be classified according to number of ports, number of positions, actuating method। जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व क्या है? जो जैसे हमारा जो वाल्व रहता है उसके अंदर एक स्पूल रहता है। स्पूल का मूवमेंट हिसाब से आपका जो
इनपुट में जितना भी हाइड्रोलिक ऑयल, वाटर और एयर, उस हिसाब से आपको जितना एयर चाहिए वो उतना एयर आपको फ्लो करेगा एज पर स्पूल मूवमेंट। अभी स्पूल का मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है, मतलब एयर मूव नहीं होगा, इनपुट आउटपुट से नहीं जाएगा। स्पूल जितना मूवमेंट होगा उतना एयर बाहर जाएगा, वो इट इज ए डिपेंड्स अपॉन द स्पूल मूवमेंट। ओके, देखिए number of pores. Pores are located on the manifold to which each directional control valve is mounted and are used as connection points to the system. Number of position, including the normal and working position which a valve spool can take. There are valves with 2 position and 3 position. Professional valves operate over an electrical variable input signal and the position of the spool is proportional to the command signal. ये क्या है, जो हमारा जो भाल्व है, जिस साइड आप जो सिग्नल देंगे उस साइड आपका जो स्पूल मूवमेंट होगा, उस टाइम इनपुट से आउटपुट तक हमारा जो आउटपुट है एयर फ्लो होगा। एक्चुएटिंग मेथड देखिए, मैनुअल, स्प्रिंग, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक। मैनुअल ऑपरेटेड क्या है, मैनुअल ऑपरेटेड valves work with a simple lever or pedals where the operator applies force to operate the valve. This is the manual. Spring force is sometimes used to recover the position of the valve. Some manual valves utilize either a lever or an external pneumatics or hydraulic signal to return the spool. Mechanical operated Mechanically operated valves apply force by using cams, wheels, rollers, etc. Hence, these valves are subjected to wear. Hydraulic pneumatic operated. A hydraulically operated directional control valve works at a much higher pressure than its pneumatic equivalent. They must therefore be far more robust in nature. So are precision machines from higher quality and strength materials. Solenoid operated. They are widely used in the hydraulic industry. These valves make use of electromechanical solenoids for sliding of the spool. Because simple application of electrical power provides control, these valves are used extensively. यह है हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व। डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व है, ये जो स्पूल मूवमेंट है। ओके, देखिए 1 ये है सोलेनॉइड, 2 ये देखिए ये पिस्टन, देन 3 ये है स्पूल विथ डायसिल, ये स्पूल है। 4 ये भाल्व का बॉडी है, भाल्व का बॉडी पार्ट। 5 दिस इज द स्प्रिंग फॉर रिटर्न के लिए, स्प्रिंग है। 1 एक्चुअल बोथ साइड एक्चुएटेड होगा तो आपको ये स्प्रिंग जरूरत नहीं है, एक साइड एक्चुएटेड हो रहा है इसलिए वो रिटर्न के लिए वो स्प्रिंग यूज किया है। 6 नंबर में देखिए ये क्या, अल्टरनेट पोर्ट्स ऑफ 2 and 4, अल्टरनेट पोर्ट्स ऑफ 2 and 4। 6 प्रेशर इंडिकेटर। ओके, देन 8 इज ए मैनुअल ओवरराइड, 9 इज ए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। देखिए अल्टरनेट पोर्ट्स 2 and 4, ये 2 and 4 क्या है, देखिए 2 and 4 ये है मेरा आउटपुट पोर्ट। 2 and 4 अल्टरनेट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट ऐसे। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ भाल्व। भाल्व का प्रेजेंटेशन देखिए, ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ओके, इनपुट आउटपुट एग्जॉस्ट, इनपुट आउटपुट एग्जॉस्ट, ये सब है। ये जितना भी है हमारा ये सब ड्राइंग में दिया है भाल्व का डायग्राम। देन टाइप ऑफ न्यूमेटिक्स भाल्व। टाइप ऑफ न्यूमेटिक्स भाल्व कितना टाइप का है, देखिए मेनली 2 टाइप ऑफ डीसी भाल्व यूज्ड विल बी यूज्ड हियर, 3/2 valve and 5/2 valve. Then what is 3 and 5 and what is 2? Okay,
3 by 2 way valve with push button actuated normally close. The valve is actuated by pressing the push button. ये है मेरा push button है जो green color है, push button. Releasing of the push button release the valve to normal position via returning spring. ये है मेरा पुश बटन, ये इसका डायग्राम है। देखिए जैसे मैं पुश बटन को प्रेस करूँगा, जो 1 नंबर लिखा है इस साइड से मेरा एयर इनसाइड इनसाइड होकर 2 नंबर से मेरा आउटपुट होगा। जैसे मैं प्रेस करके रिलीज कर दूंगा उस टाइम इस स्प्रिंग फोर्स से मेरा भाल्व का रिटर्न पोजीशन नॉर्मल पोजीशन में ये आ जाएगा। ये है 3/2 भाल्व, 1 2 3 3 फोर्स। ये है एग्जॉस्ट पोर्ट। ओके, एग्जॉस्ट पोर्ट। देन 3/2 वे valve with push button normally open, ये है वो normally close means NC valve। ये है मेरा normally open valve है। The valve is actuated by pressing the push button, releasing the push button, return to the valve to normal position by returning spring। सेम थ्योरी सेम है। जैसे हमारा स्विच जैसे NO NC जो स्विच रहता है सेम टू सेम ये भी सेम है। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन का। देन और एक देखिए 5/2 वे valve विथ सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच आप यूज करके भी आप एयर को पास कर सकते हैं। यह है दिस valve combination operates in the same way as the 5/2 way valve. It is actuated by turning the selector switch. The switching status is maintained after the selector switch has been released. If the selector switch is reversed, the valve resumes its normal position by the returning spring. Okay. सिलेक्टर स्विच से ये मेरा भाल्व ये काम करता है। ओके, देन नॉर्मली क्लोज 3/2 वे भाल्व विथ सिलेक्टर स्विच नॉर्मली क्लोज। द भाल्व इज एक्चुएटेड बाय टर्निंग द सिलेक्टर स्विच। The switching status is maintained after the selector switch has been released. Rotating the selector switch to its basic setting returns the valve to the initial position by a returning spring। यह है कि नॉर्मली क्लोज स्विच है। ओके, नॉर्मली क्लोज भाल्व है, नॉर्मली क्लोज भाल्व है। देखिए ये है सप्लाई पोर्ट, जिधर भी आप ये देख रहे हैं ये वाला सप्लाई है। ओके, ये सप्लाई पोर्ट है। ये है फ्लो, जितना भी है फ्लो। ये है हमारा एग्जॉस्ट, ये सब है एग्जॉस्ट। देखिए ये सब एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट। ओके, ये है ब्लॉक पोर्ट, जिधर भी ये लगा है ये है ब्लॉक पोर्ट। ओके, सेम टू सेम इस टाइप का भी सिंबल यूज हो रहा है। देखिए इधर इस टाइप का भी यूज हो रहा है, ये एग्जॉस्ट के लिए। ओके, ये है मेरा सप्लाई, ये है मेन टैंक से जो आप कनेक्शन करेंगे ये वाला, ये है सप्लाई। ओके, देन ये कंट्रोल के लिए भाल्व का, ये देखिए एक कंट्रोल के लिए सिंबलिंग रिप्रेजेंटेशन, ये है सिंबल रिप्रेजेंटेशन। देन व्हाट इज ए पोजीशन? पोजीशन क्या है? ए पोजीशन कैन represents the state of valve, whether the valve is in on state or off state, means on position or off position, कौन सा स्टेट में है ये देखने के लिए। ओके, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, each valve switching position is represented by a square। ओके, then the number of six squares corresponds to the number of switching position। Lines indicate the flow path, arrow shows the direction of flow। जो एरो है कौन से डायरेक्शन में आपका जो एयर फ्लो हो रहा है। द कनेक्शंस इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स आर shown by lines on the outside of the box। Set of air block positions are identified in the boxes by lines drawn at a right angle। ओके, कंप्रेसर क्या है? देखिए कंप्रेसर क्या है? इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम मोटर
or engines into the potential energy in the form of compressed air. A single central compressor can supply various pneumatics components with compressed air, which is transported through pipes from the cylinder to pneumatics components. The compressed air supply for a pneumatic system should be adequately calculated and made available in the appropriate quality. Air is compressed by the air compressor and delivered to air distribution system in the factory to ensure the quality of air acceptable. Air service equipment is utilized to prepare the air before being applied to the control system. Okay? यह है मेरा कंप्रेसर है। प्रेशर रेगुलेटिंग कंपोनेंट FRL, प्रेशर रेगुलेटिंग, जो प्रेशर कंट्रोल करके जो हमारा जो डस्ट मॉइस्चर जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसको कंप्रेस मतलब फिल्टर सब करके ये प्रेशर रेगुलेटिंग कंपोनेंट FRL यूनिट। ओके, FRL यूनिट। Pressure regulating components are formed by various components, each of which has its own pneumatic system. Filter, filter का काम क्या है? Filter can remove impurities like dust and moisture from compressed air before it is fed to pneumatic component. जितना भी pneumatic components है उस तक जो फीड करने के लिए जितना भी एक कंप्रेस एयर जो फीड होगा उसमें जितना भी इम्प्योरिटी डस्ट एंड मॉइस्चर है उसको एलिमिनेट करने के लिए फिल्टर यूज हो रहा है। आफ्टर filtration only you can pass the air to pneumatics component. Pressure regulator क्या है? To stabilize the pressure and regulate the operation of pneumatics control. यह है प्रेशर रेगुलेटर, रेगुलेटिंग करने के लिए। मतलब कितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर, मेरे को 10 kg चाहिए I want to send the 10 kg only, not 15 kg. Okay, to distance. If you will give the 15 kg to the component, maybe it is damaged. Okay, lubricant, to provide lubricant for pneumatic component is a lubricator. ये pressure regulating component है। Switching contacts and the types of actuation. Normally open contact, normally closed contact, changeover contacts, mechanically connected switch, push button with normally open contacts manually actuated by pressing, rotary switch with normally open contacts manually actuated by turning, limit switch with normally open or normally closed contacts mechanically actuated। यह है मेरा सिंबल से जब आप प्रैक्टिकल करेंगे थ्रो सिस्टम फेस्टो पी सॉफ्टवेयर जो हमारा है उस टाइम ये सब सिंबल आप यूज करके आपको जो सिमुलेटिंग करेंगे उस टाइम ये सब सिंबल आपको काम में आएगा। ओके, देखिए स्विचिंग सिंबल फॉर सोलेनॉइड कॉइल एंड रिले, इलेक्ट्रोमैकेनिकली एक्चुएटेड ऑन बोथ साइड्स। दिस इज द सिंबल, electromechanically actuated on the one side with a spring return. Solenoid valve, electromechanically actuated with a pilot control. Control or relay with 3 normal open contacts and 1 normally closed contact. Relay, यह है मेरा सिंबल्स है। ओके, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या है? ये मेरा आउटपुट जितना तक ये जो ऑपरेटिंग करने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं ये न्यूमेटिक्स एयर, इसके लिए ही हम यूज कर रहे हैं, इसका मूवमेंट के लिए ही हम यूज कर रहे हैं। ओके, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या है? द पिस्टन रॉड ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर मूव्स इनटू द फॉरवर्ड एंड पोजीशन through the supply of compressed air. When the compressed air is switched off, the piston is returned to the retract and position via a return spring. The magnetic field of a permanent magnet which is attached to
the cylinder piston actuated the proximatory switch. ओके देखिए ये जो पोर्ट्स है, इस पोर्ट से हम एयर जो पाइप से हम कनेक्शन करेंगे। जब एयर इसमें फ्लो होगा, ये पिस्टन क्या होगा मेरा पीछे साइड से ऐसे पीछे साइड तक हम यूज कर रहे हैं। जैसे ये इनपुट है, अब इसमें एयर प्रेस करेंगे तो ये पिस्टन मूवमेंट होगा। जब एयर आपको छोड़ देंगे उस टाइम ये पिस्टन को रिटर्न करने के लिए थ्रो स्प्रिंग इसके अंदर लोडेड है। थ्रो स्प्रिंग इस स्प्रिंग से ये रिट्रैक्ट होकर रिटर्न पोजीशन को आएगा। ये है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। उसके बाद डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या है? टू साइड से आपको एयर फ्लो करना है। ओके, the piston rod of the double acting cylinder is reinforced by means of alternating supply of compressor। अब इस साइड से आपको एयर फ्लो करेंगे तो पिस्टन इस साइड मूव होगा, इस साइड आपको एयर फ्लो करेंगे तो पिस्टन दूसरे साइड से मूव होगा। ओके, end position cosing at both ends prevents a sudden impact of the piston on the cylinder housing. The end position cosing can be adjusted by means of two regulating screws. The magnetic field of a permanent magnet attached to the cylinder position piston actuated the proximatory switch। Okay, यह है मेरा डबल एक्टिंग सिलेंडर का काम। सर्विस यूनिट विथ ऑन ऑफ वाल्व। The filter with water separator cleans the compressed air of dirt, pipe scale, rust, and condensate. The pressure regulator adjusts the compressed air supply to the set operating pressure and compensates for pressure fluctuations. An an arrow on the housing indicator the direction of flow. The flow wall is fitted with a filter drain screw. The pressure gauge shows the preset pressure. The on-off valve exhausts the entire control. The 3 by 2 way valve is actuated by the blue shading slips. Okay. Pressure regulator with pressure gauge. The pressure regulator maintains the compressed air supply at the set operating pressure and compensates pressure fluctuations. The direction of flow is identified by arrows on the housing. The pressure gauge indicates the set pressure। जितना भी जो गेज में दिखा रहा है वो इतना प्रेशर हमारा हम जितना प्रेशर है रिजर्वायर में वो जो फ्लो हो रहा है उतना प्रेशर आपको शो करेगा कितना प्रेशर आपका अभी अवेलेबल है, कितना केजी तक प्रेशर अवेलेबल है वो शो करने के लिए ये मेरा प्रेशर जो डायल है। ओके, ये जो गेज है ये शो करेगा, ये रेगुलेटिंग करेगा जितना प्रेशर आपको शो करना है। इस नॉब से आप रोटेटिंग करके आप ये फ्लो कर सकते हैं। देन फ्लो कंट्रोल वाल्व। Flow control valve. The one-way flow control valve consists of a combination of a flow control valve and a non-return valve. This is a non-return valve. Okay. The non-return valve blocks the flow of air in one direction. एक डायरेक्शन में फ्लो होने के बाद दूसरे डायरेक्शन में एयर रिटर्न नहीं होगा। यह है वन डायरेक्शन valve है। Whereas by air flows by the airflow by the flow control valve. The throttle cross section is adjustable by means of a cruel screw. The setting can be fixed by means of a cruel nut. Two arrows indicates the direction of flow control on the housing. The opposite direction, the airflow is unrestricted by the non-return valve. ये रिटर्न नहीं होगा। प्रेशर गेज क्या है? प्रेशर गेज इंडिकेट द प्रेशर इन न्यूमेटिक्स कंट्रोल सिस्टम। प्रेशर गेज का काम इतना है। उसके बाद ये मैनीफोल्ड। द मैनीफोल्ड विथ ए कॉमन पी सप्लाई enables a control system to be supplied with compressed air
8 इंडिविजुअल कनेक्शन। ये जो जितना जो 8 पीस है हमारा, ठीक है, ये सब आउटपुट है, ये इनपुट है। इस साइड से आप एयर को फ्लो करेंगे, आप आउटपुट के लिए 8 पीस है, आप 8 8 8 नंबर ऑफ फ्लो पाइप्स यू कैन कनेक्ट टू आउटपुट। यह है मैनीफोल्ड, इसको बोलते हैं मैनीफोल्ड। डुअल प्रेशर वाल्व, यह है एंड गेट। जैसे टू वे कंट्रोल, टू साइड से, बोथ साइड से जब एयर आएगा उस टाइम मेरा आउटपुट ऑन होगा, मतलब और वन साइड से एयर फ्लो होगा। द डुअल प्रेशर valve is switched through end function when signals are applied both input one. If different pressure are applied to two input, then the lower pressure release the output. Okay, different pressures are applied to two input, two input में input होगा तो आउटपुट में एयर फ्लो होगा। ओके, ये है डुअल प्रेशर valve एंड गेट। देन शटर valve और गेट है। द शटर valve is switched through to output output 2 by applying a single either input 1 or function. If both inputs are pressurized simultaneously, then the higher pressure release the output. Okay. Then 3 by 2 way roller lever valve normally close. यह है normally close है। The valve is actuated by pressing the roller lever. Example, by means of a cylinder trip cam, the valve is returned to normal position via return spring after release the roller lever. This valve can be changed from normally closed RS valve type to normally open ROS valve type. ये normally close से normally open. Okay. Proximatory operator देखें, proximatory switch pneumatics with cylinder attachment. थ्रू proximator से ये कैसे हमारा valve को ऑपरेटिंग करके आउटपुट तक मेरा एयर पहुंचाएगा। A permanent magnet attached to the cylinder position. The actuates a pneumatics 3 by 2 way valve when over traveled through triggering a control signal. Quick exhaust valve. The compressed air flow via port 1 to port 2. If the pressure drops at port 1, then the compressed air from 2 escapes to atmosphere by the built-in silencer. यह है मेरा क्विक एग्जॉस्ट वाल्व। क्विक एग्जॉस्ट होके एटमॉस्फेयर को चला जाएगा जो हमारा कंप्रेस एयर है। यह एग्जॉस्ट है। प्रेशर सीक्वेंस वाल्व क्या है? प्रेशर सीक्वेंस वाल्व इज reversed once the pilot pressure has been reached at port 12 and switched to the initial position via return spring after the signal has been removed. The pressure of the control signal is infinitely adjustable by means of a pressure adjusting screw. यह प्रेशर सीक्वेंस वाल्व है। 3 by 2 pneumatics valve, pneumatically actuated one side. The pneumatic valve switches at port 14 Z 10 or 12 है by a pneumatic signal and is returned to the initial position by a spring when the signal has been removed. Okay? इसका काम है 5 by 2 way double pilot valve pneumatically actuated both sides. The double pilot valve is actuated by applying pneumatic signals alternately to port 12 and to 14. It remains in its last switched position until a counter signal is received. Counter signal is received. Relay of 3.
relay of 3 देखिए. The relay consists of a coil with a core 1 and winding 3 as per diagram देखिए, with connection lugs 7, an armature 4, a return spring 2, and contact assembly with a 4 changeover contacts 5 and connecting lugs 6. When power is applied to the coil connection, current flow through the winding create a magnetic field. The armature is pulled out the coil core and the contact assembly is actuated. Electrical circuits are opened or closed by this assembly. When the electrical current is removed, the magnetic field collapses and the armature and contact assembly are returned to their original position by a return spring. Okay, a relay operated signal input plate electrical. This illuminated push button with the form of a detained switch consists of an contact assembly with one normally open contact and one normally closed contact together with a colorless transparent push button cape with a miniature lamp. The illumination push buttons in the form of momentary contact switches consist of a contact assembly with one normal open contact and one normal closed contact together with a colorless transparent push button cape with a miniature lamp. Limit switch electrically operated from the left. The electrically limit switch consists of a mechanically actuated micro switch. It is actuated when the roller lever is pressed. For example, by the trip cam of a cylinder. The switch contacts are used to open or close a circuit. The micro switch returns to its original position when the roller lever is released. 2 into 3 by 2 way solenoid valve with LED normally closed. The 3 by 2 way solenoid valves have a common supply port. The valves are reversed by applying a voltage to solenoid coil 12 or 14 and return to their initial position after the spring has cancelled the signal. Both valves are equipped with manual override. Their switching status is indicated by the LED in the connector housing. One of the solenoid valve is reversed when voltage is applied to solenoid valve 12, 1 and 2. Okay. ये है 12, 1 and 2. One of the solenoid valve is reversed when voltage applied to the 1 and 2. Okay. The other solenoid valve is reversed when voltage is applied solenoid coil 14, 1 and 4. Okay. Proximatory switch with a cylinder mounting. The proximatory switch outputs an electrical signal when it enters a magnetic field. Example, the field of a permanent magnet fitted to the piston on the cylinder. The electrical connection are molded into the switch. The switching status is shown by an LED. This yellow LED lights when the switch is actuated. जब स्विच एक्चुएटेड होगा उस टाइम ये येलो एलईडी ऑन स्टेट में आएगा. Inductive proximatory sensor non-flushing mounted. Inductive proximatory sensors are fitted with an oscillator circuit made up of a parallel resonance circuit with a coil, a capacitor, and an amplifier. The ferrite cup core of the coil
directs the electromagnetic field towards the outside. If an electrically conductive material is brought within the range of the electromagnetic stray field, then eddy currents form in the material in accordance with the law of induction and dampen the oscillator vibration. Depending on the conductive, the dimension and the proximity of the conductive object, the oscillator can be damped to such an extent that the vibrator catches. The damping of the oscillator is evaluated electronically and provides the output signal. The proximity sensor has an PNP output, that is, the signal line is connected to position potential when switched. ये इलेक्ट्रोमैकेनिकली इंडक्टिव प्रॉक्सिमेटर सेंसर स्विच है। ओके, जब हम प्रैक्टिकल सिमुलेशन करेंगे सिस्टम में फेस्टो पी सॉफ्टवेयर एक है, उस टाइम आपको ये सब जितना भी मैं थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया हूँ, जितना भी भाल्व सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, उसके बाद रेगुलेटर, फ्लो कंट्रोल भाल्व, मैनिफोल्ड, डुअल प्रेशर भाल्व, शटर भाल्व, 3/2, 4/2, 5/2, एग्जॉस्ट वाल्व, कोई एग्जॉस्ट वाल्व, जितने भी रिले से थ्रो रिले ऑपरेटेड, सिग्नल इनपुट, लिमिट स्विच में ऑपरेशन, अप्रोक्सीमेटर स्विच ऑपरेशन, ये सब जितना भी है हम प्रैक्टिकल करने का टाइम में, सिमुलेशन करने का टाइम में ये सब सिंबल आपको एक एक यूज करके मैं आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में और एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।